here. Now someone asked me, this was an offline question also, and it was from Jafar's question was the same. So they are asking that can we have different zones, a zone from this region and another zone from another region? So let's quickly have a look at that. It's not possible, but still I'll show it to you. Yes, whoever was answering about the replication, first thing, yes, replication is there, guys, but this is not exactly like replication, और इसमें थोड़ा सा difference होता है. So I will not consider them same. और replication का जब topic आएगा तब हम लोग उसको करते हैं. I do not want people to get confused, hence I'm not discussing those information, but still it is not the same. Selecting a zone here and replicating your data. I mean, you replicating something is a different thing, and Azure providing an availability zone, that is a different thing. So let's say that I'm creating a new virtual machine here. Sorry, guys. Let's say VM001, and this we are planning to keep in zone 1. Hence, I'm naming this as zone 1. So now it says availability option. So either I see, though this East US जो है region, इसमें availability zone का option है, इसलिए मुझको option मिल रहा है. If I select other than East US, if I select East US 2, East US 2 में भी है. Sorry. Let me look for a region जहाँ पर नहीं होगा. So you'll see how it looks. So there are few regions where we'll not find availability zone. ठीक है, वो हम देखते हैं कौन से वाले में नहीं है. We'll see that. Okay, here it is, मिल गया. So we do not have one here. So if a user says or a client say that this is my crucial application and I'm looking for a availability zone feature or some redundancy, they will not name the feature. They will say some redundancy, ऐसा कुछ बोलते हैं. And with this they are also saying कि यार हमारे जो सारे users है, spectators है, या जो मेरे application को use करने वाली public है, they are based in West US. So I want you to take a region as West US. West US के आसपास वहीं कहीं पर मेरा सर्वर देना आप लोग, ठीक है. बट आई ऑल्सो वॉन्ट रिडेंडेंसी, ताकि एक अगर ये डाउन होता है डेटा सेंटर तो दूसरे डेटा सेंटर में मेरी एप्लीकेशन चलती रहे, which is not possible. Why? Because if I select region as West US, तो West US में availability zone का feature नहीं है. If you see this, guys, so this is how it looks. If you do not have a feature of availability zone, so this is what it looks like. This is how it looks like. Is it clear, guys? कि कैसे दिखता है अगर फीचर नहीं है तो, और जहां पर है we'll see that now. East US has availability zone feature, has availability set. इसको अब हम पढ़ने वाले हैं what is it. फिलहाल we are just discussing availability zone. So here we have, I told you I can select zone 1 and zone 2. I select only 2 zones as of now, let's say, and I'm creating my server. Name of the server is VM zone 1. ऐसा कोई नाम मैंने इसको दे दिया, वर्चुअल मशीन को एक नाम दे दिया, लेट्स से VM. See, thus 2 virtual machines will be created with the name shown above. मतलब VM zone 1 ऐसा एक machine बनेगा और 1-2 ऐसा एक machine बनेगा. Why? Because I have selected 2 of them. If I select only 1, तो सिर्फ एक में ही बनेगा. Are you guys getting it? So ये दोनों जो बन रहे हैं ये exact copy रहेंगे कि we can differentiate different services in both? That's up to you. See, if this is the method I select, अब मैं यहाँ पर एक deploy कर सकता हूँ. The question was from, okay.
So that's up to you. Was who asked the question? NT. Henty. Okay. So Henty, yes, that's up to you. Now if I use this method, यहाँ पर मैं zone 1 select करता हूँ. I will select this और मैं next कर लूंगा, एक server बन जाएगा. Do you want me to create one? Let's try creating one. आप लोगों का server create, though we have seen it, but still एक revision हो जाएगा, because ये एक ऐसा task है जिसको आप काफी बार देखने वाले हो. So don't get bored with this. ठीक है, networking part I'm not explaining now. ये हम लोग already कर चुके हैं. So this is the first server we are creating, guys. If I use this method, the second server which I create, I will have to manually select zone 2 and then I will have to create one server. और इस केस में ये दोनों बिल्कुल अलग सर्वर्स होंगे, बट आई हैव प्रोविजन कि मैं उन दोनों पे एक एप्लीकेशन को किसी तरह इंस्टॉल करूं. Are you guys getting it, what I'm trying to say? So this is one method. The another method is the one which I selected first. वो दोनों जोन को मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूं और वहीं से मशीन बनेगी और एग्जैक्टली रेप्लिका होगा वो दोनों पे. Is it clear, guys? So if I am using this method, let me have this machine up and running and then I'll show it to you the next machine. But there I will have to select. First machine मैंने यहाँ पर बना ली. अब second machine बनाते वक्त मुझको select करना होगा. This is my first machine, it is deployed. Second machine ये करते वक्त मुझको select करना होगा zone 2. Then third machine करते वक्त मुझको फिर से select करना होगा zone 1. Fourth deploy करते हुए फिर zone 2. ये सब मुझको करना होगा. And that और ये individual अलग अलग machines है. Then with the help of few softwares वगैरह I will have to make sure कि ये सब एक जैसे चले. I will have to make sure कि इन सब में एक application हो जो multiple इससे ये हो जिससे हम लोगों को service मिले. But if I use the other method, वहां पे वो अपने आप बन जाएंगे. So this machine is created already. Now I have one machine which is for East US and which is in zone 1. ठीक है, मेरे पास अब मेरा एक machine आ चुका है. This is up and ready. I can log into this. I can check some details. Now I'm creating another virtual machine. I'm not going to log into that machine. We don't have to do that. So let's say that I'm planning to create another machine. So I'm calling it VM002. Now, Jafar, this is for your question. You said, can I select different zones? So if I select some different region, even if I select some zone, this is not your zone, the one which you have selected in region. So that is not possible. Okay, it is only possible if you select same region. यहाँ पर आओगे तब आप zone 2 को select कर सकते हो और अपनी एक machine deploy कर सकते हो, तभी वो एक इसमें होगे. Now let me tell you what will happen if I select here, ठीक है, और if I select zone 2 here, यहाँ पर मैं अगर करता भी हूँ. So what about networking, guys? What did I tell you about networking? Will I get the same network? जिस network में मेरा first machine गया था, वही virtual network मुझको दिखेगा क्या? What did we discuss when we discussed virtual network? Can I share virtual network throughout regions? If I have a virtual network, let's say ये मेरा जो Paytm का application है, guys, are you able to hear me? Now, Yes. Now it's audible. Yes. Electricity issue है यहाँ पर, so I have connected using my phone. Let me share my screen again. I was using dual screen, so I'll have to share it again. Just give me a minute, guys.
Can you see my screen now? Yes. Yes. Okay. Right. So my question was, this I have explained while discussing virtual network. Let's say I have a virtual network here named, because this is my Paytm application we are discussing, right? Or instead of Paytm, let's say we are creating something new, some new application, something like we have Google Pay. Let's say we are planning to create some B Pay, like we have G Pay. Similarly, we are planning to create some B Pay. So for this, I have created a virtual network. For this application, I have created a specific virtual network named VNet, a virtual network named BPay. So my question is, especially to those guys who have attended my VNet wale sare sessions, to you guys, if I take this zone for my next virtual machine, for my next appliance, will I be able to see this network over there? No. What about others? Do you guys think I'll be able to see this? We did this practical, guys, right? We created two virtual networks in Aditya's resource group, if you remember. And then we tried to deploy, we deployed few machines also. Yes, what about others? Irfan says no. What about others? People who have not attended that lecture, that is fine. But please go and watch those videos. बहुत frequently asked question है, trouble shooting में भी बहुत काम आने वाली चीज है. So you cannot skip it. So my question again here is, I'm planning to have 2 zones, and as you guys question that can I have it in different region. पहली बात तो डेफिनेटली अगर मैं VNet शेयर कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ उसके आंसर पे वो डिपेंड नहीं करता. इससे स्ट्रेट अवे नो, you will not be able to do that. But the question is, will you be able to share your virtual network? Is it possible? Yes guys, yes, no, maybe. Those who attended, when I asked you, you guys did not have any questions, and now when I am asking questions, you guys do not have answers. It is Virtual not going network to can be help you in your interview. Someone says no. Yes, sorry, was that who? Amit? Yes, Amit, what are you saying? Yeah, I will say yes, because virtual network, it's beyond region, right? Okay, what about others? Anyone else who's with Irfan, who's with Amit? We should be able to connect 2 machines in different networks. Okay, what about others, guys? Anyone else? Anyone else other than Chetan, other than Amit, no, Irfan? we won't be able to connect. It's a logical group where we can connect even with ठीक है guys, different okay, region, fine, right? fine. No more answers. बहुत ज़्यादा confusion में नहीं चाहिए. So I'll quickly clarify one by one answers. So yes, Jafar bhai, you are correct. Yes, we cannot share. Logical is only resource group, Henty, not region. Regions are physically separated things. So so by default, bakiyo ka answer is incorrect. No, you cannot share. Yes, there can be a sharing. Different methods can be there. कोई 2 VNet का pairing आप कर लोगे, वो सब एक अलग चीज है. But by default जो है, and you cannot even after pairing जो है आप network को share नहीं कर सकते हो. Pairing के बाद बस आप जो एक टनल बीच में ओपन कर सकते हो जिससे कम्युनिकेशन हो सकता है. बट स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू सी इफ माय virtual network for BPay is here and I'm deploying few servers for BPay, so I will have to deploy all servers in one region. Okay, this BPay, it will not appear in another region. Is it clear, guys? I'm not talking about zone. Just because it is there on the picture, do not get confused. I'm talking about region. So let's say this is one region. I'll just explain it, elaborate it. I thought कोई उसको लेके confused ना हो जाए. This is Pune region. Assume that this has availability zone feature. This is Mumbai region. Assume that it has feature. किसमें है किसमें नहीं है, we'll see that. वो globe पे दिख जाएगा. And I showed it to you yesterday कि क्या difference है. Who could tell me कि difference कैसे globe पे? How will I identify कि किस region में availability zone है और किसमें नहीं है? पर्पल कलर. किस वाले पे है पर्पल कलर? जिसमें है वो या जिसमें नहीं है? जिसमें है अवेलेबिलिटी जोन जिसमें है
वो पर्पल में शो हुआ है. Exactly. है. So we'll go to that globe and check. वैसे तो list वगैरह सब कुछ available है. As of now we have that globe, hence I'm discussing that globe. So let's say that these are three regions we are talking about. These are three regions which are in question. Let me. It's Pune, Mumbai, and Chennai. So let's say this is Pune. This is Mumbai. And guys, these are just assumptions. ठीक है? Do not quote me on this कि यार इसमें है इसमें नहीं है. We are not discussing that now. We'll discuss that later. किसमें है किसमें नहीं है, and that keep on changing. And there's one in Chennai. I hope you guys are able to see it. This has come on my small screen, and but I hope you can read it. ठीक है? इसको हमको वैसे कहीं present करना नहीं है. So my Pune region has availability zone feature. My Mumbai region has availability zone feature. Chennai region doesn't have. Example के लिए. Now the question was that I am planning to use two zones. For one application, I'm planning to use two zones. So I deployed my first virtual machine here. The question was, can I use another zone for second virtual machine? So is Chennai even capable of doing that? Race में भी है Chennai. To answer your question, if I'm doing that, तो Chennai वाला region नहीं है, right? So by default it is gone. It is not even Yes. Qualifying for that. So the next region we have here is Mumbai. Mumbai. So Mumbai में भी Yes. 3 zone है. Now the question is, can I deploy my first virtual machine here in Pune's Hinjewadi zone, and the second virtual machine will be here. Second virtual machine here in Mumbai's, let's say, Andheri zone. I'm not sure about the name, guys. और पुणे के भी नाम नहीं पता है मुझको. These are just examples. ठीक है? So is it possible? Yes, it is possible to have two different machines, but वो कोई help नहीं करेगी एक दूसरे को. क्यों? Because I am creating one application, and one application उसके सारे resource सब कुछ उसका जो है वो एक virtual network में होना चाहिए. Then only they will be able to communicate with each other. Otherwise, they will not be able to communicate with each other. With each other. So the VNet virtual network which I have in my Pune region, will I be able to see that virtual network in Mumbai region? That was my question. I created all this because I thought I got that intuition कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो विद इन जोन और इसको लेकर. सो आई वाजंट आस्किंग कि वो जो हिंजेवड़ी में जो ये है मेरा हिंजेवड़ी में जो वर्चुअल नेटवर्क है वो इसमें दिखाई देगा या नहीं, इयॉन में दिखाई देगा या नहीं. नहीं, वर्चुअल नेटवर्क जो है रीजन बेस्ड पे बनता है. सो इफ माय वर्चुअल नेटवर्क इज इन पुणे, will I be able to see that virtual network in Mumbai? That is my question, and we already No. answered that. But is it clear now? Is it थोड़ा सा clear हुआ आप लोगों के लिए? हाँ भाई. Yeah. Yes. Right? So this is the Yes. first limitation. In the moment we say we have this limitation, इसका मतलब है कि इसके आगे deploy वगैरह करने का कोई यही नहीं होगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा, right? इसके आगे हम लोगों को डिप्लॉयमेंट का कोई सेंस बनता ही नहीं है. अगर यहीं पर ये नहीं कर सकते हो आप, then it doesn't make any sense. ठीक है guys, is it clear? Yeah. So to answer, we are answering your question. No, it is not possible. We cannot do that. So next virtual machine or next machine or any resource we're talking about, I will take that machine here and not in let me erase it. So this is not possible, and it's not only because of VNet ka limitation. There are more limitations. We will discuss them later, but as of now it is not possible. It is not recommended. Technically भी possible नहीं है. So second virtual machine or second machine I am taking here in zone 2. Similarly third को मैं यहाँ पर लेता हूँ, fourth को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ. Okay, now next question, Henty, this is your this is to answer your question. Will can we have them different servers? Yes, we can have them, but what is the use of different servers? अगर मेरा इन servers पे कोई सेम चीज सिंक नहीं हो रही है, तो these are simply different servers for me. ये मेरे लिए किसी भी तरह से हाई अवेलेबिलिटी अचीव नहीं कर रहा है. Guys, I will be using this word HA, high availability, because that is the business requirement we have. Whenever I say आगे जाके हम VMSS पढ़ेंगे, virtual machine scale set, replication, जो कुछ पढ़ेंगे, इन सब का core purpose एक ही है, HA, high availability. What do you mean by high availability? Is my application should be up for maximum time. कुछ डाउन हो रहा है, कोई कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, that should not impact my application. That is high availability. तो ये जितने भी टेक्निकल सॉल्यूशन वी आर डिस्कसिंग, इसका बिजनेस प्रॉब्लम है हाई अवेलेबिलिटी. इज इट क्लियर गाइस?
So whenever I say HA is not, we are not achieving HA, तो मतलब वो solution हमारे किसी काम में नहीं आ रहा है, high availability हम achieve नहीं कर पा रहे. So Henty, the question which you asked, can we have different servers or will we have different? Yes, we will have different, we could have different, but then is it helping me? I have BPay application, इसके कुछ सर्वर्स यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर, दोनों में अलग अलग डेटा है. कुछ कोई हेल्प होगा क्या? मेरे किसी यूजर का प्रोफाइल यहाँ पर बना है जिसने एक और लेट्स से फेसबुक जैसा एप्लीकेशन मैं करता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, राइट? यस, वी विल डिस्कस दैट लेटर. ये इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप है. 11 9 लेवल 11 by 9 नहीं है, वो 11 times 9 है. We'll discuss that later. वो रटने वाले क्वेश्चंस है. We do not have to understand these questions. इनको बस मगअप करना है. I'll come to that. वो है हमारे वन नोट में. ठीक है. So the question was, let's say Facebook जैसा ऐप है, एंटी यू आर यूजिंग फेसबुक, और फेसबुक ने इस तरह से हाई अवेलेबिलिटी कर रखा है उसके किसी इंजीनियर ने कि सब पे डेटा अलग अलग है. इज इट यूजफुल फॉर यू? लेट्स से आप अभी किसी सेशन पे कनेक्ट हुए थे, जिसका सर्वर जो है, जिस सेशन से कनेक्ट हुए थे, वो सर्वर हिंजेवड़ी में है. एंड हिंजेवड़ी में आपका वो सर्वर है जहां से आपने फेसबुक की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो. यू आर सिटिंग समवेयर हियर, यू आर सिटिंग समवेयर हियर, यू आर यूजिंग फेसबुक. You got connected to a server, which server is there in Hinjawadi. For some reason Hinjawadi में कुछ flood आ गया, कुछ आ गया, ये server down हो गया. And you were talking to someone, maybe कोई business deal crack कर रहे थे, कुछ आपको business मिलने वाला था. You are about to send a friend request to someone और you send it. आपका प्रोफाइल यहाँ पर सब कुछ बन रहा था. यहाँ पर जो है फ्लड आ गया, ये पूरा डाउन हो गया 5-6 घंटे के लिए. Now you are able to, आपको यहाँ पर दिख गया नो सर्विस अवेलेबल. You refreshed it और facebook.com आपको फिर से अवेलेबल दिख रहा है. बट नाउ दिस टाइम यू आर कनेक्टेड टू इयन वाला डेटा सेंटर. अब आपको फेसबुक तो दिख रहा है, बट यहाँ पर जो आपका पूरा सेशन चल रहा था, यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स बने हुए थे, दैट इज नॉट बीइंग रेप्लिकेटेड हियर. आपका अकाउंट तो दिख रहा है, बट यहाँ पर एक नया फेसबुक दिख रहा है आपको. जो नए 4 दोस्त है वो दिख नहीं रहे, जो बिजनेस डील की आप बात कर रहे थे वो दिख नहीं रही है. सो इज इट हाई अवेलेबिलिटी? विल यू लाइक दैट एप्लीकेशन? आपके किसी काम की हुई है हाई अवेलेबिलिटी? No. राइट? सो यू कुड हैव दैट, बट इट्स यूजलेस. वो किसी काम का नहीं हुआ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर. काम में तभी होगा जब मिनिमम डेटा लॉस होगा, मैक्स बस शायद 1 मिनट का. और नाउअडेज वी हैव फीचर्स जहां पर 1 मिनट का भी डेटा लॉस नहीं होगा. कि इफ आई वाज चैटिंग विद समवन हियर और यहाँ पर ये डेटा सेंटर डाउन होता है, तो मेरी चैट का एक सेंटेंस भी नहीं जाना चाहिए. एंड आई शुड बी मूव्ड. मुझको यहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मुझको एज एन यूजर को यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा. सर्विसेज अपने आप यहाँ से अप हो जानी चाहिए इस डेटा सेंटर से. इट शुड बी सीमलेस. टू होम? इट शुड बी सीमलेस फॉर यूजर्स. ये बैकएंड में आपको क्या करना है, यू डू इट, पर यूजर के लिए वो सीमलेस होना चाहिए. आर यू गाइस गेटिंग इट? कि why do we use high availability and what is high availability? So it's a good practice to keep everything within a region, right? But, Good practice. Do you have an option? right. It's which screen do you see? Do you see my Blue. okay, Desktop. I changed it. Can you see the correct screen now? Yes. Okay, right. So you were asking should it's a good practice. Forget about the practice. Do we have an option when I'm selecting HA? Do I have an option to keep this in different regions? But No. yes, to answer your question, it is a good practice. To other resources, I could have one option, not for high availability. HA के लिए तो definitely same region में रखेंगे हम लोग. But I could keep my सर्वर हियर, एप्लीकेशन सर्वर, और उसका डेटाबेस सर्वर किसी और रीजन में मैं रख सकता हूँ, और कोई वीपीएन से टनलिंग वगैरह करके इन दोनों को कनेक्ट मैं करवा सकता हूँ. सो दिस वीनेट एंड दिस वीनेट, यहाँ पर कोई और वीनेट बनानी पड़ेगी मुझको. सो दिस वीनेट शुड टॉक टू ईच अदर. ये सब करना पड़ेगा. आई कुड अचीव दैट, बट व्हाई विल आई डू दैट? इतना सब मैं कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा हूँ? इससे कुछ खास अचीव भी तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, राइट? इज इट क्लियर गाइस? So yes, in this case, you can say it is a good practice or best practice to keep everything here. But in with regard to high availability or with regard to availability zone, you do not have an option to go to another virtual network. So it is must that you should be there. Is it clear, guys? कोई और question है किसी के mind में related to this topic, so I can move ahead if this is clear to you guys?
Yes, guys. Yes, no, maybe. Amit, Akib, Henti, Irfan, Khalid, Yeah, got it. Clear. Sana, Got it. Samitra, Yogesh. I hope you guys are getting it. Yes. Yes. Someone asked me about access on portal, and Amit, you also asked me. So the portal which we had for Isaac Bhai, this is my portal. I have given access on my portal to plenty of people. So I think I cannot accommodate more requests here. Let me see how many people are there. And the other one which we had for Isaac's Bhai's subscription, that I think has already expired. Let me see if we have 1 or 2 more days remaining. उसमें भी access देता हूँ. At least you guys can see. I have 6,500 इतना balance मेरे पास pending है. So I'll see कि जो other directories हम लोगों ने बनाई है. Yeah, we have 14,000 balance. The balance काफी है, but validity जो है. So I have sufficient people here. I don't think so. किसी और को देकर यहाँ पर I will have to then यहाँ पर balance खत्म हो जाएगा. We will not be able to practice. And guys, whoever is practicing, please make sure to delete all resources. Otherwise, you are wasting your resources, money, and other people, your colleagues, they will not be able to do practice on this one. So if you create any resource, once you're done with practicing, make sure you come there. You go to your resource group. Like this, you select all of them and you click here delete. I have kept this because I keep using them. Click here, type yes, and click on delete. Okay, this is what you have to do. So looking at the Isaac Bhai's subscription, I'll check कितना पैसे बाकी है इसमें. Are you guys practicing by the way? जिनको access दिया है मुश्किल से 500 use हुए हैं इस पे, and I doubt वो भी मैंने ही किए. I suspect that. Are you guys practicing जिनको access मिला है? Did you guys try creating? It is being expired in 2 days. Still मैं क्या करता हूँ considering कि Thursday है, Friday. चलो जितना भी time आपको मिलता है to Ramesh and whoever has asked and Amit. ठीक है, I'll give you access on this subscription. 2 दिन है, 14,000 है, यूटिलाइज कर लो. जो बनाना है बनाओ, नहीं भी डिलीट करो तो 2 दिन में वैसे ही 14,000 यूज नहीं हो रहा है. बट इट इज गुड प्रैक्टिस टू डिलीट इट. सो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू डिलीट इट. जो भी बनाना है बनाओ, ये सब कर लो. आई विल गिव यू एक्सेस पोस्ट दिस सेशन. And once this is done, then I will have to ask one of you guys to purchase a subscription. And please do not purchase. 2 लोग मिलके मत purchase करो. Last time Sonam also purchased and Isaac Bhai also purchased. I was just explaining and you guys purchased it. And now look at this. We wasted our 14,500 in this subscription and we wasted our 14,500 in Sonam's subscription because हमने उतने topics cover नहीं किए थे और आप लोग practice नहीं कर पाए. This is what I was talking about. So do not go and purchase. Do not do that. मैं किसी एक से डिस्कस करता हूँ, हम एक ही में परचेज करेंगे, सबको एक्सेस देंगे. बिकॉज दिस इज ओनली वैलिड फॉर 30 days. इसकी वैलिडिटी होती है 30 days की. आप यूज नहीं भी करते हो तो ये वेस्ट हो जाएगा. Your PAN card number is affiliated there. You cannot purchase it again, right? So do not purchase one, guys. I will discuss with someone, one of you, and I'll purchase one and then I'll give access. फिलहाल 2 दिन के लिए ये है. मंडे को नेक्स्ट परचेज करेंगे हम लोग. वीकेंड पे मैं डिस्कस कर लूंगा किसी से. सो फिलहाल ये 2 दिन के लिए अमित, रमेश एंड whoever is asking, ये एक्सेस मैं आप लोगों को यहाँ का दे रहा हूँ. You can come and create machine and whatever you want to do it with this. So is it clear, guys? Yes, someone has any question? Yes, guys, anyone? Guys, can you hear me? Yes, no, maybe. Yeah. Yes, we can hear you. So I presume there are no questions, right? So let's take the next topic. We have 5 minutes. I don't think so we will be able to. So well, just one. If we are not going to cover much, I can ask a question. Sure. Yeah. So right now, what example you gave us about say Facebook or any application which we want to build and we want to make sure that it has high availability. So what about multi-regional applications? I mean, these are multi-region applications. Just because I'm hosting that application here, that does not mean they're not accessible from some other region. I'm hosting my application here. That doesn't mean this is accessible only from here. There could be plenty of reasons why am I hosting here. Let's say that I have an application like Google Pay. Google Pay has financial data. RBI says that if you have some application or anything related to IT where you have Indian users financial data,
so you cannot go beyond India. So I cannot host my Google Pay, India Google Pay in UAE or somewhere या कहीं पर भी. So I'm left with only these options. यहाँ पे मैं किस बेस पे सेलेक्ट करूंगा? Here I could have some other options कि मैं being जी पे मैं किसी और की सर्विस भी यूज कर रहा हूँ, तो वो कौन सा पास में होगा? या फिर हर सर्विस जो है Azure की हर रीजन में अवेलेबल नहीं है. There are few Right, right. services So कि इस रीजन में होगी, there are few maybe services इस पे may होगी. so Based on that, I maybe will for an select my region. example we are maybe for an example we are using Power BI for reporting, so Right. that might be on a different region. Maybe we are using Snowflake, that might be on a different region on Azure. Why not? So Yes. that time we have to select how we are going to take the flow, right? Yes, why So not? in that part, how does the network play roles? I mean, is it a wrong question to ask in this point, or should we wait? I mean, we'll be covering something similar in the future. We'll cover that. We'll cover that. We discussed Okay, VNet, okay. guys. We discussed VNet. If everyone remembers, VNet हमने डिस्कस Yes. किया. इससे हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हम नेटवर्क को सेग्रीगेट करते हैं. Why do we segregate networks? Because हम लोगों को एक्सेसेस ये करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, सिक्योरिटी वगैरह. सेग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? एक नेटवर्क शुड नॉट बी एबल टू टॉक टू अनदर नेटवर्क. दैट इज सेग्रीगेशन. दैट हैपेंस व्हेन वी डू साइडर वगैरह ये सब करते हैं. सो द मोमेंट आई से VNet, अ वर्चुअल नेटवर्क, this VNet cannot talk to any other VNet, even if it is in same region, guys. Yes, it's a good question. I forgot one point, so ये question से याद आ गया. Just because I'm showing one VNet here, that does not mean one region can have only one VNet. I could have VNet 1, VNet 2, multiple applications रख सकता हूँ मैं एक region में. इनफैक्ट होते हैं, एक region को बहुत सारे लोग यूज करते हैं. ठीक है, I could have multiple VNets, and these VNets they cannot talk to each other, even if they are in same region or different region. Virtual networks, they cannot talk to each other. But like Chetan gave an example, now there is some business requirement. पहले मैंने बनाया था कि ठीक है, these should not talk to each other, but now there is a business requirement that these two VNets should talk to each other, VNet 1 and VNet 2, या फिर VNet 4, be it in the same region or cross region. VNets cannot talk to each other, but now if there is a business requirement, then for that we have, and it is a must ask question in interview. जितनों ने भी यहाँ पर attend किए हैं वो लोगों से आप पूछ सकते हो, और even if you Google, you will come to know कि must ask questions में से है, and that method is called VNet peering. We haven't covered that yet. We'll do that. उसमें हम proper practical करके देखेंगे. VNet peering में भी global and local वो सब भी है. We'll see that. Whenever we do that, उसको हम detail में पढ़ेंगे. I'm not sure if I have written it here. Yes, here it is. VNet peering. इसमें मैंने steps by step सब कुछ दे रखा है, the how to do it. Because I want you guys to do it on portal. ये सब अच्छे से आप करोगे तभी आप answers दे पाओगे. But don't worry, this we have not covered yet. VNet peering, ये जैसे, because you will not be able to understand what is a global VNet peering and what is a local local VNet peering unless you understand the regions. Hence, I want to confirm this first. ये cover कर लूँ मैं regions वगैरह, and then we'll come to this. But yes, to answer your question, Chetan, we could do that. By default, they cannot communicate with each other. And if it is a business requirement that VNet 1 and VNet 2 should talk to each other, we could achieve that. Irrespective of their region. If we want these two to talk to each other, we could do local VNet peering. And if we want these two to talk to each other, VNet 3 and 4, we'll have to do a global VNet peering. But yes, that is very much possible. And you can do it in a control environment. कि इतना ही communication होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. You could do that also. Any other questions, guys? Only 4 minutes are left, so I don't think so we will be able to cover. Next topic which I wanted to cover today was availability zone. Like we read availability zone we already discussed. Next topic was availability set, and where will we use that? ऐसा रीजन जिसमें सिर्फ एक डेटा सेंटर है. यहाँ पर एक डेटा सेंटर है, राइट? ये एक रीजन है. लेट्स से दिस इज वेस्ट यूएस. वेस्ट यूएस एक रीजन है, ठीक है. It has only one data center. So is it possible to have availability zone feature here? ये वाला replicate करना possible है here? No. यहाँ पर नहीं है, right? But just because it doesn't have, बल्कि ये यूजर भी एडमिन है कि नहीं, मुझको रीजन यही यूज करना है. क्यों? क्योंकि मेरे यूजर्स यहीं पे हैं, आई डू नॉट वांट टू फेस लेटेंसी वगैरह. लेटेंसी भी एक बहुत बड़ा ये करता है गाइस. एक सर्वे था, आई विल शेयर द लिंक विद यू. आई कांट रिकॉल, किसी और का ही एग्जांपल यूज कर रहा हूं मैं.
बट आई रेड दैट सर्वे के एक ह्यूमन टेंडेंसी इवन इफ यू आर सिटिंग फ्री बट कोई वेबसाइट खोलने में 2 से 4 सेकंड से ज्यादा ले रही, यू विल मूव टू नेक्स्ट वेबसाइट। गूगल पे और जीपे को आप लोग ये करके देख लो, कंपेयर करके देख लो। जीपे नहीं चल रहा, यू विल नॉट वेट, यू विल सिंपली मूव टू गूगल पे, फोन पे। इफ इट इज नॉट वर्किंग यू विल मूव टू पेटीएम, किसी पे इसमें मूव हो जाते हो आप लोग। तो लेटेंसी एक बहुत बड़ा इशू है, इसलिए कई बार अगर इनका स्पेक्टेटर्स और इनके यूजर्स इस रीजन में है, सो दे आर एडमिन के इसी रीजन में हमको ज्यादा से ज्यादा हमारा ये चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो समवन हु इज एडमिन के नहीं, मुझको वेस्ट यूएस में ही चाहिए, एंड ही आल्सो वांट्स HA। व्हाट इज HA? हाई अवेलेबिलिटी। सो हाई अवेलेबिलिटी के बहुत सारे मेथड्स है, VMSS भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। Availability zone is one of the methods to achieve high availability, but someone who doesn't have that leverage or that privilege कि जिसको availability zone मिल जाए, that does not mean कि हम उसको बोलेंगे ठीक है यार आप यूज ही मत करो high availability, आप एक ही पे रिलाई हो, नहीं। So in that case इस data center में भी high availability हम लोग जो है ये कर सकते हैं। How to divide that data center based on availability, कि पूरा डेटा सेंटर डाउन हो गया ना, तभी हमारा अवेलेबिलिटी सेट वाला जो है ये काम में नहीं आएगा। पूरा डेटा सेंटर ही डाउन होता है, लेकिन डेटा सेंटर का सर्टेन पोर्शन डाउन होता है, तब उसको कैसे डिवाइड करना है कि एक एप्लीकेशन के सर्वर्स डेटा सेंटर के अलग अलग कोने में हो, ताकि वो ये हो। दैट वी विल सी टुमारो, इट्स वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, बट अगेन वो हम इसका ही एक छोटा वर्जन डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अवेलेबिलिटी जोन, दिस इज अवेलेबिलिटी सेट। ये जोन के लेवल पे ये कर रहा है, ये सेट के, ये डिजास्टर रिकवरी को भी आपको कवर कर देगा, ये डिजास्टर रिकवरी को कवर नहीं करता। पूरा डेटा सेंटर ही अगर डाउन हो गया तो देन आपने क्या सेट बना रखा है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, ठीक है guys, I'll stop for today if unless you guys have any question. If DC is down then it is considered as a single point of failure, correct me if I am wrong. थोड़ा सा जम लेंगे, बट यस, अगर आपका एप्लीकेशन एक ही इसमें है, एक ही जगह पर है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, और वो डीसी डाउन हो जाता तो आपका एप्लीकेशन चला गया। मतलब सिर्फ एक है जहां पर कोई रिडंडेंसी है ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। यस गाइस, देयर इज 1 minute left. Anyone has any other question? So, well, in what scenario will use this kind of infrastructure for only one? So nobody would want their application to go down, right? We'll discuss that tomorrow. थोड़ा सा lengthy answer होगा उसका। Okay, no problem. ठीक है guys, if you do not have Thank any you. questions, we'll stop today's session and then I'll create your users and I'll ping it to you. जिसका भी user है Amit and Ramesh, if anyone else जिस किसी और को भी चाहिए, let me know. I'm stopping the session guys. Thank you. Bye. Okay, bye.